Hello everyone, welcome back to my channel. In this lesson we are going to learn English pronouns. Complete form first, convert into short form. How we use it, how we pronounced. फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कंप्लीट फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसे ईज़िली वे में आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सकते हैं और इसे पहचान सकते हो आप कैसे आप इसको बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट फॉर्म फर्स्ट, शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट। दे आर, देयर, आई एम नॉट, I am not, you are not, you're not, he is not, he is not, he isn't, she is not, she is not, she isn't, it is not, it's not, it isn't, we are not, we're not, we aren't, you are not, you're not, you aren't, they are not, they're not, they aren't. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Am I not? Aren't I? Are you not? Aren't you? Is he not? Isn't he? Is she not? Isn't she? Is it not? Isn't it? Are we not? Aren't we? Are you not? Aren't you? Are they not? Aren't they? This is a very important for spoken. It is short form. Again मैंने आपको बताया आज, पहले भी मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको बताया है, तो आज मैंने अगेन आपको जो बचे हुए थे मैंने आपको आज बताया शॉर्ट फॉर्म। एंड आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सारे याद कर लीजिए। एंड दैन फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बने रहिए। आज से ही बहुत सारी वीडियोस मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड, स्पोकन से रिलेटेड बताती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।